Students. Hello. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Yes, ma'am. ପିଲାମାନେ ଶୁଭା ଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା। अरे हेलो स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. माने मु 20 मिनिट्स ला स्ट्रगल करछि नेटवर्क सहित. ना ना मैम आपन सुबितिला जे आमे कथा आपन सुबु नथिला. हां प्रा मते दीपक सही कथा कहिला. माने 10 टा रो 10 टा 20 हे गला रे. माने मु स्ट्रगल करछि नेटवर्क सहित वाईफाई मो निजो नेटवर्क सब सहित कोडा भी कनेक्ट होनी. कोन कहबो को ए होछि डिसएडवांटेजेस ऑनलाइन क्लास रो. एडवांटेजेस हला खना आसे दरकार ने आराम रे घरे बसी की क्लास नेलो सेटा एडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस हला इटा अजथा माने टाइम किलिंग वेस्टेज ऑफ टाइम हला. एनीवे चलो स्टार्ट करिबा. आउ टाइम वेस्ट न करी की वेट ए मोमेंट पिला माने. आई होप कि क्लियरली सुबा जाउछि ना. हो ना पिला Yes, ma'am. Yes, ma'am. हां हां ओके ओके. 10 मिनट. You did not କହିବି. Dear students, we have discussed the Industrial Dispute Act 1947. In Industrial Dispute 1947, we have discussed some important definition related to Industrial Dispute Act. ठीक है.
Important definition. What do you mean by industry? What do you mean by industrial dispute? As per the Industrial Dispute Act 1947, what do you mean by strike? And what are the different types of strike? And what are the rules, regulation for strike? Likewise, what do you mean by lockout? And what are the rules, regulation for lockout? See, strike and lockout rules, regulation, it is same, it is similar, no? Whatever may be the things will adopt by the worker regarding to strike, same things are employer will adopt at the time of lockout. Apart from this, also we have discussed what do you mean by chalo, what do you mean by closure? Ena kahuchi closure kon. See, dear students, closure means temporary period. Ma'am, voice is breaking. पूरा break Lock- हो चुका है। डीडीसी रे क्लास नेले कि प्रॉब्लम हो घरे क्लास ने भी गोटे प्रॉब्लम नहीं पूरा आराम से क्लास टा नबो ଏବେ ମ୍ୟାମ୍ ଠିକ परा ଅଛି होची कोई कि मासे एठी नै छी ଶୁଭୁଛି एबे ଠିକ ठीक अछि देखिलो एना एमटी परा अप एंड डाउन होबो ब्रेक होबो ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ चलो। ଟିକେ ହବ ମ୍ୟାଡାମ ତାପରେ ଠିକ ହେଇଯିବ ठीक है तो अच्छा हो तो चलो लॉकआउट माने कौन लॉकआउट मींस डियर स्टूडेंट्स इट इज द लॉकआउट लॉकआउट हैला जोटा कि टेम्पररी क्लोज एम्प्लॉयर क्लोज करिवो एस्टैब्लिशमेंट को अच्छा क्लोजर माने क्लोजर नाही थी जस्ट मैं एठू कहि दोची क्लोजर माने कौन सी डियर स्टूडेंट्स क्लोजर मींस इट इज द परमानेंट क्लोज डाउन द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट लॉकआउट माने हैला टेम्पररी क्लोज करिवो क्लोज माने हम कहलो परमानेंटली एस्टैब्लिशमेंट को बंद कर दबो ये बंद करिवो हु विल क्लोज द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली द एम्प्लॉयर परमानेंटली द एम्प्लॉयर विल क्लोज द एस्टैब्लिशमेंट दैट इज द क्लोजर पूरा बंद कर दबो इंडस्ट्री को हला सेटा क्लोजर परमानेंटली जोटा कि एस्टैब्लिशमेंट क्लोज हो जबो मन रखिबो तपर असला कोन ले ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय ले ऑफ पिला माने मन रखिबो भलो से ले ऑफ टा कोन ले ऑफ मींस the employer will not give employment to the worker the employer refuse to give employment to the worker why kahi ki madam kahi ki refuse karibo kahi ki employment dabani due to some reason the reason is due to the insufficient raw material in the industry due to the shortage of due to the shortage of power, due to the shortage of raw material, due to the breakdown the machinery, due to the natural calamities. अच्छी की ले ऑफ का गोटे सेकंड में देखु छी ना मी ले ऑफ हैला तो ले ऑफ कोन कहूची ले ऑफ हैला द एम्प्लॉयर रिफ्यूज टू गिव एम्प्लॉयमेंट the employer inability to give employment to the worker employer worker मान को employment दबो नहीं काहे ना various reasons are there the reason due to the breakdown the machinery भांगी जाईची spare parts आसिया को मासे टाइम लागिवो 2 मास टाइम लागिवो 6 मास टाइम लागिवो so production it is completely stop in the industry that's why worker will not give the work to the workers right the employer will not assign the task to the workers apart from this shortage of power nahi industry bond he jaichi power means electrical energy right apart from this the shortage of raw material nahi raw material bilkul nahi tahale production habani mane amar kon habo industry re employer kamo dei paribo nahi due to the also the natural disasters natural calamity like ma'am like flood, cyclone, earthquake. If any kind of situation, यार तो disturb होची तमे भी disturb करो, हैला? Any kind of situation will happen. झरो flood पाई कहि कि चारियाडे पानी ही पानी भर्ती ही जाईची. Cyclone पाई कहि कि power कटि गला कि cyclone पाई कहि कि due to various reason problem हैला. एई सब कारण रु मध्य employer कहिबो मो काम देई परिबे नाही. हैला आउ गोटे मेजर रीजन हम लाइफ टाइम रे देखि कि आसले ना जस्ट ड्यू टू दी कोरोना
कोरोना गोटे जो नेचुरल डिजास्टर आम कह कि मैन मेड डिजास्टर तो आम आज पर्यंत आइडेंटिफाई करें बट अल्टीमेटली ड्यू टू दी कोरोना द पेंडेमिक जो सिचुएशन आसला वर्ल्ड रे सब इंडस्ट्री स्टॉप हो गला सेटा को आम ले ऑफ कहबा परमानेंट तो क्लोजिंग डाउन दी प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हेई नथिला तो कौन होइतिला जेमति हमर कोरोना सरी गला तापरे वर्कर सेमानकर बैक टू वर्क सेमाने तांको काम स्टार्ट करि पाले तो परमानेंट तो एटा कोन थिला ना एटा थिला हमर ले ऑफ सिचुएशन वर्ल्ड रे ले ऑफ हो गला इंडस्ट्री सब ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटी नेचुरल डिजास्टर इतिवस्ता कोरोना जेटा कि हम लाइफ टाइम रे हम देखि के आसी हैला एई सब रीजन रो जदी इंडस्ट्री तार क्लोज कला ताहेले वर्कर को सीए धर काम तो देलानी वर्कर तो काम पाइलानी ताहेले कोन ऑर्गेनाइजेशन रे इंडस्ट्री रे वर्कर को वेजेस दबो ना नहीं जदि काम देलानी मैम इंडस्ट्री बंद हो गला देन द वर्कर विल गेट द वेजेस और नॉट यस द वर्कर विल गेट द वेजेस हु विल गेट द वेजेस को माने वेज पाइबे कोन इंडस्ट्री बंद हला परे भी वर्कर माने वेज पाइबे यस पाइबे किंतु केते दिन पाइबे राइट्स टू वर्कर टू गेट द वेजेस किए वेज पाइबो ना दोज वर्कर्स जो वर्कर माने दोज वर्कर्स the completed his probation period his or her probation period means not less than 1 year probation period ta ବର୍ଷେ जो वर्कर माने ବର୍ଷେ तांका probation period complete कर देथिबे not less than 1 year and the name reflected in the muster roll जोटा कि register रे तांकर salary तांकर wages through हमर बैंक through रु जाउथबो muster roll reflect करूथबो सेमाने पाइबे वेजेस केते वेज पाइबे कोन फुल वेज पाइबे नो ना इक्वल टू 50% ऑफ द टोटल बेसिक वेज आउट डीए रो बेसिक वेज आउट डीए रो 50% सेमाने पाइबे केते दिन पाइबे ना अप टू 45 डेज 45 दिन पर्यंत बेसिक आउट डीए रो 45 डेज 50% 45 डेज पर्यंत एम्प्लॉयर वर्कर मान को वेज प्रोवाइड करिवो तापरे मैम हेले कोन हबो तापरे मैम हेले एम्प्लॉयर आउ पैसा दे परिबो नाही अनेबल टू गिव एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज दी व्हाट एज वेल एज दी वेजेस सेति पय कोरोना रे किति की समस्या प्रॉब्लम फेस कले हमें देखि जे इंडस्ट्री कोन पैसा देला तो इंडस्ट्री केई मासे देला के 45 अप टू 45 डेज पर किए मासे देला किए 15 दिन देला किए 50 दिन पर्यंत देला तापर सब बंद हो गला सब घर को पळे आसले आसिकी घर को आसला परे घर को पळे आसले आसिकी कोन कले जे जे जो प्रकार सफर हेले तो सेहि पई से अप टू 40 से भी कोठु आनिबो इंडस्ट्री तो प्रोडक्शन तो बंद अछि सेल तो नाही प्रोडक्ट रो ताले मु कोठु पैसा आनि की देबी so up to 45 days some employer should manage and after that the employer may not provide the layoff wages पिला माने एटा ले ऑफ रे मने रखिबो बुझी गले ना पिला माने यस ना स्टूडेंट हां तापरे चलंतु जदि गोटे वर्कर को इंडस्ट्री रिट्रेंच कर देला रिट्रेंचमेंट मींस टर्मिनेशन ड्यू टू दी वेरियस रीजन को भी प्रकार रीजन हो रीजन the worker may did some kind of misconduct in the industry due to the take the what the good step towards the industry and to punishment towards the worker if the organization will terminate the employee को जदि terminate करी देला right जदि सेटा employer worker रा fault अछि then employer will not give any kind of wages and any kind of facility to the worker जदि सेटा organization रा fault अछि organization want to close down the place of employment close down कर दबा को चाहूँ इंडस्ट्री को सही क्षेत्र रे in that particular area no the organization will give 3 months advance wages to the workers 3 मासर advance wages worker को दबो हैला तो the 3 months advance wages worker को दबो during the 3 months the worker will identify his or her alternative से तांकर alternative identify करिबे हैला this is the related to retrenchment तो चलो पिला माने बेसिकली
आम जोटा कि मेजर फैक्टर ए सब इंपोर्टेंट डेफिनेशन रे मन रखिबे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रो जोटा कि डिस्प्यूट एथि पई हुए डिस्प्यूट कोथि पई हुए लेअप पई हुए डिस्प्यूट कोथि पई हुए क्लोजर पई हुए डिस्प्यूट कोथि पई हुए स्ट्राइक करी के डिस्प्यूट कोथि पई हुए ना बेसिकली जेते हमर ऑर्गेनाइजेशन रे एम्प्लॉयर कोन करिवो ना ये स्ट्राइक कले से लॉकडाउन करिवो लॉकआउट करिवो हां सो ए सब रीजन रो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है if the dispute it is there in the industry then how we will settle the dispute how what are the steps we will take so that we can settle the dispute in the industry see you can see this slide here machinery for settle or handling industrial dispute see dear students here aku tike dhyan re pura mane rakhibe hala machinery for handling industrial dispute it is we can go through the to settle the industrial dispute if the worker having some strike worker means basically what declared strike now what the step we will take so that we can settle the dispute so dispute ko hame settle kariba so here we can in this slide we can discuss no there are two ways to solve the industrial dispute duita way hame industrial dispute ko solve kar pariba one way is the preventive machinery second way it is a settlement machinery so dear students preventive हम आज पर्यंत जानिचे प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर हमें क्योर होबा पर्यंत काहेकि जिबा डिजीज ता होबा पर्यंत काहेकि जिबा व्हाई नॉट वी विल टेक अर्लियर स्टेप एंड वी हैव टू क्योर मींस माने हमें रूट टू क्लियर करबा जोटा कि अर्लियर स्टेप नै के प्रिवेंशन नै के कोरोना होबा पई काहेकि जिबा प्रिवेंटिव नै जिबा सेति पे हमर प्रिवेंशन आसिला कोरोना न होबा पई बोली हबो काहेकि मेडिकल जीवो काहेकि तापर जत्ते सब सिचुएशन हमें फेस करबा काहेकि तो ये कौन कहा गला ना प्रिवेंटिव मशीनरी थ्रू प्रिवेंटिव मशीनरी वी कैन टेक सम प्रिवेंशन एंड वी हैव टू सेटल द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ही हबनी हमें एमिति किछि स्टेप नबा एमिति किछि प्रिवेंशन नबा जोटा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ही हबनी तो सब प्रिवेंशन कोन प्रिवेंटिव मशीनरी किए वॉलंटरी एंड दैट इज द बेसिकली नॉन स्टैट्यूटरी माने कोन नॉन स्टैट्यूटरी मींस एटी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रहिबो नाही and all the preventive machinery are the bipartite in nature. Already we have discussed workers participation management one chapter. It is a bipartite in nature. How we can settle industrial dispute. Already we have discussed collective bargaining is a chapter. It is there in your first unit. How industry can settle the industrial dispute through different type, different process adopted by the collective bargaining. Apart from this, it is the grievance procedure. Grievance, whatever may be the grievance behalf of the workers, the management try to solve it. No, it is again bipartite in nature. जहाँ सेमान को grievance अच्छी management कौन करिबो ताको solve करिबो grievance procedure रे. Apart from this, we can go for the code of हमें जिबा कोथरे ना code of discipline and standing order. देखो code of discipline and standing order basically na code of discipline re it is the workers agree to maintain discipline in the industry gote ame code of conduct ame amaro industry adopt kariba the code of conduct basically na it is the employer will agree to maintain discipline the worker will agree to maintain discipline and the creditor also will agree to maintain discipline in the industry so समस्ते गोटे आमे कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट गोटे इंडस्ट्री रे आमे गोटे फिक्स करिबा जोटा कि आमे समस्ते डिसिप्लिन मेंटेन करिबा पई आमे समस्ते कोन आमे प्रॉमिस करिबा सो दैट्स हमर कोड ऑफ डिसिप्लिन अंडर एंड इट इज अगेन बाइपार्टाइट इन नेचर स्टैंडिंग ऑर्डर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट गोटे अछि आमे आगे पढिबा जाय कि सो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर जोटा कि आमे कहिबा इंडस्ट्रियल द स्टैंडिंग ऑर्डर मींस हियर द इंडस्ट्री विल फिक्स सम guideline, some rules and regulation, right, towards the industry, towards the worker, and where the worker will agree for that and the management will agree for that. So, mane dui jana taku agree karibe and basing on this they will do their work in the industry. Eta again hala bipartite in nature. And tripartite, jota ki ame kahiba, edi bodies achi. Ma'am, standing orders from? Standing orders from one, rules, regulation and guideline fixed by the employer and workers. Are gote act मध्ये standing order गोटे act आछि industrial employment standing order act हमें पढ़ी बात हो जाय कि किंतु एडी act हमें यूज करबानी हला standing order means it is some guideline rules regulation fixed by the workers and as well as the management
and basing on this they will work in the industry. Rules regulation fix कर देबे. Now worker dispute करिवो ना management dispute करिवो, केही dispute करिवो हैला. It is a guideline towards the workers हैला. And tripartite bodies तो एठी देखिला पिला माने tripartite bodies रे एठी government involvement हबनी because all PTA सुनो पिला माने यार already disturb होची तमे माने आउ disturb करन ये ले सेटा पिला Vrindavan Mahanti. वृंदावन मानती ସବୁ ମିଛ हैला. तो tripartite bodies कोन कहूची पिला माने ना tripartite bodies कहूची ए तो government interference नाही because it is voluntary, it is non statutory. Statutory जोठी आसीगला सेठी government आसीगला, statutory जोठी आसीगला सेठी law आसीगला. एटा तो voluntary non statutory. Tripartite body माने third party मैडम केमते इंट्रोड्यूस होला एटा third party body हमें कुआडे जीवा कहिलो गवर्नमेंट को हमें जाउने. थर्ड पार्टी बेसिकली मैनेजमेंट वर्कर्स और हमें जाई परिबा वॉलंटरी आर्बिटर गोटे आर्बिट्रेशन को हमें नहीं परिबा. जदि हमें सेटलमेंट करि पारले देन म्यूचुअली हमें दुई जण मिसिकरी गोटे आर्बिटर आनबा. मु एठी पढेबी आर्बिटर आनबा गोटे लोक को हमें आनिबा जोटा कि हम दुई जण को भीतर कॉन्फ्लिक्ट को से सॉल्व करिवो. सो ए सब थ्रू रु हमें कोन करिबा ना वी कैन सेटल दी वी कैन व्हाट we should solve the industrial dispute through ତମେ ପୁଣି କାନ୍ଦିବ ମତେ ମାରୁଛି ମୋର ପାଡୁଛି ଖାଇଦି ଖାଇଲେ ପାଡୁଛି ମାନେ ଅଭଦ୍ରାମୀ କହିଲ. ଭାବୁଛି ତମେ एक्सक्यूज मैडम जी डिस्टर्बेंस करछन तांको मीटिंग रो बाहर कर दियंतु हमर क्लास लॉस होची. छोड़े मांडो सहित ମୁଁ ଫୋନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କିଛି କହୁଛି କାଇଁ ମୁଁ ତ ବନ୍ଦ କରଣ ପ୍ଲିଜ ଗो ଅନ୍ ମ୍ୟୁଟ ତମେ ଏଇଡେ ମିଛ ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବୁ ମାନେ କାଳେ ମାନେ जान भाई माइक टा बंद करनो. ଓ ଜୁମ ରେ ଇଏ ଚାଲିଛି କି ତମେ ଏଇଡେ ମିଛ ନା ଘୋड़ा पेड़ चलची ए गुना नहीं जोड़ा Ma'am, बनी please mute himself. तोर दियो देखे କରୁଛି ଯାଉଛି. Ma'am, अरे ओडिया please खाली mute बुझियो him. नो. ଅତି ଅଭଦ୍ର ମାନେ କଣ କହିଲ ଅତି useless. मैम ताको बाहर कर दो ग्रुप रो से भी माइक ऑन करची. मैम ताको एग्जिट कर दियंतु ग्रुप रो आपण କରୁଛି ଯାଉଛି. ଅତି ଅଭଦ୍ରର ଚରମ ସୀମା ହେଲା. ରିମୁଭ ଗୋଟେ ଥିବ ହେଇଗଲା ନା ରିମୁଭ ପିଲାମାନେ ରିମୁଭ ହେଇଗଲା ନା आगे ଦେଖିଲ मैडम ଆଉ ନାହିଁ ତ. ହଁ ଅତି ଅଭଦ୍ର ମାନେ କଣ କହିଲ ଗୋଟେ ଅଭଦ୍ରାମୀର ଚରମ ସୀମା. ସେଇଥିପାଇଁ ଟୁ ୱେ କରାଯାଏନି ଏଇ ଅଭଦ୍ରାମୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ. ସମସ୍ତେ କଣ ସେମିତି ଏଇ କିଛିଟା ଏମିତିଆର. चलो तो चलନ୍ତୁ कौन है सो प्रिवेंटिव मशीनरी. सो थ्रू प्रिवेंटिव मशीनरी वी कैन सेटल द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. पिला माने हमें एतिकी सब स्टेप नबा इंडस्ट्री को. वी विल गो थ्रू दी WPM CB ग्रीवांस प्रोसीड्यूर सब हमें अडॉप्ट कले सब प्रकार मेडिसिन हमें ट्राई कर देले. स्टिल वर्कर्स क्रिएट डिस्प्यूट इन द इंडस्ट्री. स्टिल वर्कर्स माने इंडस्ट्री डिस्प्यूट क्रिएट कले. तो हमें कौन करबा से डिस्प्यूट को सेटल करबा ना करबानी. यस वी विल गो थ्रू द सेटलमेंट मशीनरी. हमें बाइपार्टाइट मशीनरी केते नेगोशिएशन कले स्टिल वर्कर माने कन्विंस हेले नाही. देन व्हाट द इंडस्ट्री विल डू. द इंडस्ट्री विल गो थ्रू द सेटलमेंट मशीनरी. Settlement machinery, it is statutory in nature. Non-statutory means what? What I told you? Non-statutory means the government interference should not be there. Government intervention is not there. Statutory means the interference by the government. It is government interfere kariba.
कोठी ना सेटलमेंट मशीनरी रे इन द सेटलमेंट मशीनरी we can go through the conciliation arbitration and adjudication कोन कोन थ्रू आमे जिबा सेटल करिया को डिस्प्यूट ना फर्स्ट we will go to the conciliation through conciliation if the dispute may not be settled then we can go through the arbitration if the through arbitration the dispute may not be settled then finally we can go through the adjudication and adjudication is the last settlement machinery adopted by the Indian constitution hela a mane kono pila mane kochi dhyanno re tike sunu so dear students conciliation under the conciliation एटी गोटे पार्ट नाही के खाली मने रखिबो conciliation work committee is there work committee already हमें डिस्कशन करछे conciliation रे चारटा जिंस आसी under the conciliation कोन under the conciliation one is the work committee second is the conciliation officer third one is the board of conciliation and fourth one is the court of inquiry अछि ऊपर court of inquiry तो कोन हैला एटी so conciliation body रे हमर फर्स्ट जिबा में वर्क कमिटी को वर्क कमिटी ए सबुआग ट्राइपार्टाइट नेचर सबुआग ट्राइपार्टाइट नेचर एक्सेप्ट वर्क कमिटी हला गोटिए बाइपार्टाइट नेचर हला बाकी सब ट्राइपार्टाइट सब गवर्नमेंट इंटरफियरेंस करिवो फर्स्ट रे जेते हम इंडस्ट्री डिस्प्यूट हबो पिला माने धर डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट गोटे वर्कर कहिला कि मैनेजमेंट मो सहित मिसबिहेव कला मते एक्सप्लॉइट कला वर्कर कहिला दिस इज अ ग्रीवेंस बाय द वर्कर टुवर्ड्स द मैनेजमेंट हला आसी गला एक्सप्लॉइटेशन तो एठी कोन करा जिवो फास्ट रे मु कोठी किछ भी मु फास्ट रे सुप्रीम कोर्ट पळेबी हेई परिबनी फास्ट रे मु हाई कोर्ट को जिबी हेई परिबनी हाई कोर्ट म कथा सुनीबनी मु कोठी किछ भी फर्स्ट आई हैव टू गो टू दी कोठी की ना फर्स्ट आई विल lodge my complaint to the committee now who is the committee that appointed by the as per the Industrial Dispute Act 1947 we can call as a work committee कोटे अपॉइंट करा जाय ऑलरेडी हमें पढ़िचे वर्क कमिटी किए मु पढ़िथिली WPM रे who is the work committee is the equal number of representative behalf of the management and worker management और worker behalf रो equal number of representative गोटे committee develop हेतिबो right so जो committee रे basically the responsibility of the committee to solve the dispute through cooperation through mutual understanding रे cooperative attitude रे समाने ट्राई करिवे तांको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करबा पय हैला धर वर्क कमिटी सब ट्राई कर देला कमिटी adopted many steps to solve the dispute but the committee unable to solve the dispute committee dispute को solve करि पाला नाही मु कहिथिली को dispute को से हैंडल करिवो कोडा तार लुकआउट नाही मु गोटे लिस्ट कहिथिली से लिस्ट भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 रे अछि हैला सॉल्व करि पाला तापर हमें कोठी कोन करिवा ना वी कैन गो टू द conciliation officer who is the conciliation officer step by step हैला आमे एमती मन इच्छा पळेबानी इट इज अ स्टेप बाय स्टेप कमिटी जो हाथ टेकी दबो सॉल्व करि परिबनी देन वी कैन गो टू द conciliation officer ना conciliation officer वर्क कमिटी इज द सेक्शन 3 conciliation officer इज द सेक्शन 4 हैला तापरे हमरो गोटे गोटे जाउची तापरे बोर्ड ऑफ conciliation हैला सेक्शन 5 कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हैला सेक्शन 7 सेक्शन 6 हैला तो conciliation officer पाखु हम जिबा ना conciliation officer what the conciliation officer will do who is the conciliation officer is a person गोटे लोक conciliation officer माने गोटे person is a person appointed by the appropriate government notification in the official gazette समस्त समति आसे गोटे जगह रे मन रखि देबो पिला माने conciliation officer किए conciliation officer is a person गोटे लोक appointed by the appropriate government behalf of center state government ru gote loko asithibo jota ki notification in the official gazette jota ki official website re notify hithibo yela conciliation officer hela so sei tar government ko appoint karthibo as per the criteria rules regulation qualification experience sabone ki gala conciliation officer kon karibo the conciliation officer will come particular industry it may be a specified industry particular industry सब industry को नहीं जो industry dispute है जी है ना so for a specified industry
It may be permanently or it may be temporary period of time. Maybe से industry को permanent appoint ही पारे, maybe limited or temporary period of time. That decision taken by the appropriate government. ताको salary किए दबो, ताको salary दबो government. Rules regulation follow by government. सबो government रो से आसीबो. हैला जिते भी कंसलेशन ऑफिसर आसीबो आसिले तो ये ही गला थर्ड पार्टी कहा भितर झगड़ा अछि वर्कर मैनेजमेंट भितर थर्ड पार्टी के आसिला गवर्नमेंट रो कंसलेशन ऑफिसर गोटे लोक सी आसिके कोन करिवे एंटायर सिचुएशन को एनालिसिस करिवे द कंसलेशन ऑफिसर विल एनालिसिस योर एंटायर सिचुएशन सब सिचुएशन को से एनालिसिस करिवे सिचुएशन को एनालिसिस करके कंसलेशन ऑफिसर हैव टू सॉल्व द डिस्प्यूट कंसलेशन ऑफिसर कोन करिवो डिस्प्यूट को सॉल्व करबा को सिए तार आमूल चूल चेष्टा करिवो हैला कंसलेशन ऑफिसर जोटा कि मे बी सॉल्व द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मे नॉट बी से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करि पारे न करि पारे व्हाटएवर मे बी द केस बट द कंसलेशन ऑफिसर हैव टू सबमिट द रिपोर्ट विद इन 14 days टू द गवर्नमेंट को केते दिन भीतर रिपोर्ट सबमिट करिबा 14 दिन भीतर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करू कि न करू करिबा वेल एंड गुड सेडी प्रॉब्लम हमर सॉर्ट आउट हे गला सॉल्व हे गला खरे सॉल्व करि पालानी ताहले कोन हबो करू न करू 14 दिन रे से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को तार रिपोर्ट सबमिट कर दबो कंसलेशन ऑफिसर ड्यूटी ओवर हे गला डिस्प्यूट सॉल्व हे पालानी हमर प्रॉब्लम ता कोठी की पास हबो बोर्ड ऑफ कंसलेशन को गला बोर्ड ऑफ कंसलेशन किए हु इज द बोर्ड ऑफ बोर्ड आसी गला माने मोर देन 1% हमें जानिचे हैला बोर्ड ऑफ कंसलेशन मींस अगेन एटा सेम जिंस हम इट अडॉप्ट करिबा द बोर्ड अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोर्ड कहा बिहाफ पे अपॉइंटमेंट हेतिबो पिला माने द बोर्ड अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट सही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रो बोर्ड आसीबे सेतरे किए थिबे ना वन चेयरमैन गोटिए चेयरमैन एंड others out 2 to 4 other member गोटे चेयरमैन रहिले 2 जन रु 4 जन अदर मेंबर थिबे से बोर्ड रे हैला 2 जन हेले जदि 2 जन थिबे इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट एंड वर्कर मैनेजमेंट रु जने थिबे वर्कर साइड रु जने थिबे से बोर्ड को की अपॉइंट करथिबो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करथिबो से बोर्ड को हैला जदि 4 जन मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 नंबर रहिबे गोटिए चेयरमैन को छाड़ी केरी हैला कोन कहिले एठी मो ना बोर्ड either basically 2 or more 2 or 4 other member चेयरमैन को छाड़ी के 2 जन हेले गोटे वर्कर साइड रो आस्तिबे गोटे मैनेजमेंट साइड रो आस्तिबे 4 जन हेले 2 जन मैनेजमेंट साइड रो 2 जन वर्कर साइड रो तो 2 जन हेले चेयरमैन को मिसी के 3 जन 4 जन हेले चेयरमैन को मिसी के 5 जन एंड द चेयरमैन इट मस्ट बी ऑलवेज से कौन करथिबे से बायस नथिबे चेयरमैन कौन करथिबे से बायस नथिबे से ताको डिसीजन को निजे नेबे नेदर एम्प्लॉयर कथा सुनिबे न वर्कर कथा सुनिबे तो माने कौन करिवे काउंसिल बोर्ड ऑफ कंसिलेशन दे विल एनालिसिस द एंटायर सिचुएशन कौन वर्क कमिटी करथिला ए देखो आमे माने देखुने गोटे ग्रुप आसीबो धर हमर लोकल टीम गोटे धर फॉर एग्जांपल म एठी कहूची गोटे प्रॉब्लम हैला फर्स्ट हमर के जीवो लोकल पुलिस से तार एनालिसिस कर देला से किछि करि पालान तापर हमर कोन जीवो स्पेशल पुलिस को तापर बुझा जी स्पेशल पुलिस पर डिमांड करा जीवो कि नै तमे क्राइम ब्रांच को दियो तमे सीबीआई को दियो ता माने से कोन करिवो ए जो फास्ट जो लोक कोन काम करथिला सेइठु नै किछि एनालिसिस करिवो प्रथम लोक कोन काम करथिला सेमिति जते आसीबो बोर्ड ऑफ कंसलेशन सो कंसलेशन बोर्ड कोन करिवो व्हाट द स्टेप टेकन बाय द वर्क कमिटी what the step already taken by the consulation officer so सबु को analysis किए करिवो board of consulation and the board of consulation try to solve the industrial dispute so industrial dispute को solve करिया को try करिवो board of consulation it may be solve the industrial dispute or may not be से करि पारे न करि पारे न भी करि पारे करि दबो बोली किछि कर देला तो एटी सॉल्व हे गेला जदी न करि पारिला देन हमर प्रॉब्लम ता कोठी के जीवो कोन करा जीवो ना द बोर्ड ऑफ कोन काउंसिल बोर्ड ऑफ कंसिलेशन हैव टू सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 2 months टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के दिन रिपोर्ट सबमिट करिवो 2 मास रे का को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट
सबमिट करदब भाई एया थिला सिचुएशन एया हला कंक्लूजन आमे एतिकी पर्यंत करि परछु आमे करि परिबु कि करि परिबु जहां भी 2 मास भीतर हला तांको कार्यकाल हला 2 मास सरी गला बोर्ड ऑफ इंक्वायरी रो काम हां सॉरी कंसलेशन बोर्ड रो काम एथि तापरे तमरो प्रॉब्लम तम डिस्प्यूट कोठी की जिवो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इथि आसला एथि कोर्ट इंटरफेयर कल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी again the one independent person a court may consist of one independent person गोटिए लोक हैला or any such member कि आउ गोटे दिटा इंडिपेंडेंट पर्सन को दिया जिवो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रे गोटिए लोक भी हेई पारे कि 2-3 जन भी हेई पारंती सेटा डिसीजन नबो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसीजन ता नबो हैला notification in the official gazette notify करके appropriate government decision नबो it may be the one independent person will go to inquiry or more than one person will go to inquiry the situation that decision taken by the appropriate government court of inquiry पिला माने ए जो court of inquiry concept आसेला ना ये कौन करिवो ये केवल inquiry करिवो inquiry the court will inquire the dispute the court will not solve the dispute court solve करिया को dispute एठी आसीबनी court कोन करिया बसला only inquiry करिबा पई inquiry कोन सिचुएशन काहे के dispute ता solve होई पारुनी कोन inquiry करिवो interact with the worker interact with the management हमर ये के वर्क कमिटी कोन करथिला what step taken by the consultation officer what step taken by the consultation board of consultation only inquiry करिवो solve करिवनी inquiry ये केते दिन पर्यंत करिवो court of inquiry the court of inquiry हैला court रो काम हैला सब inquiry करिकी within 6 months 6 मास भितरे ताको 6 मास टाइम दिया दिबो within a period of 6 months have to submit the report to the appropriate government को 6 मास भितरे report submit कर दो court of inquiry will take this step एडी court of inquiry step नबो court of inquiry रो analysis रो step निया जिवो whether the dispute will go to the voluntary arbitration whether the dispute will go to the labor court whether the dispute will go to the industrial tribunal whether the dispute will go to the national tribunal सब आगे लिखा है मु पढी की कहूची कोन होची court of inquiry will take this step court of inquiry will take this step and decide सी डिसाइड करिवो इंक्वायरी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रो सिचुएशन रे डिसाइड करिवो कि ए डिस्प्यूट ता हमें वॉलंटरी आर्बिट्रेशन को दबा कि ए डिस्प्यूट लेबर कोर्ट को जीवो कि ए डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को जीवो कि ए डिस्प्यूट नेशनल ट्रिब्यूनल को जीवो एडजुडिकेशन जीवो ना आर्बिट्रेशन जीवो हैला तो एठी कोन हबो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जदि डिसाइड कला द केस इट मस्ट बी गो टू द वॉलंटरी आर्बिट्रेशन जदि एटा वॉलंटरी आर्बिट्रेशन को जीवा दरकार हैला वॉलंटरी आर्बिट्रेशन किए arbiter means the government appropriate government appointed some arbiter in a different state level ले किछ arbiter को से appoint करछ arbiter माने गोटे पर्सन धर हमें कहबा चीफ सेक्रेटेरिएट से गोटे arbiter हेई परिबे the chief judge of the high court से गोटे arbiter हेई परिबे सो एमाने ले गोटे गोटे arbiter धर एमाने कोन करिवे ना एई जो लोक माने जो डिस्प्यूट मैनेजमेंट एंड वर्कर वॉलंटरीली एमाने कोन करिवे ना जीवे से आर्बिटर पाखको they will go to the arbiter to settle the dispute through arbitration देखो arbitration कहा जाए तो एमाने सेही आर्बिटर पाखको जीवे एंड तांकर डिस्प्यूट को सेटल करिवे थ्रू आर्बिट्रेशन तो सेमाने जदि न जीवे ताहा हेले कोन हबो गवर्नमेंट कोन करिवो एमान को ऊपर स्टेप नबो so सेही पाई they have to go there and they should settle the dispute से कोन करिवो आंको डिस्प्यूट को सेटल करिवो हैला ए सुनंतो न सुनंतो जहा करंतु एटा से माने फाइनल सेडी डिसीजन कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेप नेची माने से माने जदि जिबे कोर्ट ऑफ वॉलंटरी आर्बिट्रेशन पाई देन दे शुड गो टू द वॉलंटरी आर्बिट्रेशन एटा अमेंडमेंट है केटा 1947 रे आसी नथिला वॉलंटरी आर्बिट्रेशन ता 1956 अमेंडमेंट रे एटा को इंट्रोड्यूस करा देछि पिला माने वॉलंटरी आर्बिट्रेशन बिफोर adjudication पूर्वरु वॉलंटरी आर्बिट्रेशन आमे गोटे स्टेप नबा
1956 amendment रे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इंट्रोड्यूस कला जो थिरे कि एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन एग्री टू डिस्कस से माने एग्री करिवे टू डिस्कस द डिस्प्यूट इन फ्रंट ऑफ द आर्बिटर हैला से आर्बिटर कोन माने मन इच्छा पळेबे ना कोन ना इंडस्ट्रियल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट will set one arbiter सी आर्बिटर को डिसाइड करिवो कि से आर्बिटर हेई परिबो आर्बिटर whether को आर्बिटर हेबे so before 1 month appropriate government will notify in the official gazette रे notify करिवो the person can be the arbiter and you have to go there सेठी तमे जीवो तम डिस्प्यूट को सेटल करिवो एई दिन एई टाइम एई मोमेंट रे जाई सेटल करिवो कहिले माने कोन करिवे सेठी के जिवे जाई के मान को डिस्प्यूट सेटल करिवे हैला आमे गोटिए जीवा पूर्व आमे वॉलंटरी आर्बिट्रेशन टाको देखिबा अच्छा तो धर कोर्ट कहला वॉलंटरी आर्बिट्रेशन थ्रू रो माने सेटल करिवे ताहाले एटा वॉलंटरी आर्बिट्रेशन थ्रू रो सेटल हबो नाइ जदि कोर्ट कहबो ना द केस द डिस्प्यूट विल गो टू द लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल पिला माने जो डिस्प्यूट लेबर कोर्ट सेटल करिवो से डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को जीवो नाइ सी द सम लिस्ट इट इज देयर इन द लेबर कोर्ट some dispute handled by the labor court some dispute handled by the industrial tribunal for example mu ethi कहूची धरा dispute related to कोन example कहूची dispute related to termination धरा termination dispute ता किए करूची labor court deal करूची ताहा हेले से dispute ता कोठी किछि labor court को धरा bonus related dispute चलची सेटा किए डील करूची इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ताहले हम डिस्प्यूट कोठी किछि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को जीवो बुझिले ना लिस्ट दिया जाईची को जिंस लेबर कोर्ट हैंडल करिवो को डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हैंडल करिवो दीटा आगो लिस्ट कंप्लीटली डिफरेंट कारण जो जिंस लेबर कोर्ट डील करिवो से जिंस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल डील करिवो नाही हैला तो एठी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कहि दबो द डिस्प्यूट शुड हैंडल द लेबर कोर्ट ता माने लेबर कोर्ट जहा डिसीजन नबो लेबर कोर्ट द डिस्प्यूट विल गो टू द लेबर कोर्ट and whatever may be the decision by the labor court towards the management and worker it is a final decision and the management and worker have to accept it आउ ता छडा कोनोसी चॉइस आ अल्टरनेटिव नाही एटा हला फाइनल डिस्प्यूट रो सेटलमेंट लेबर कोर्ट थ्रू रो और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल थ्रू रो कोर्ट ट्रिब्यूनल आसी गला माने एडी कोन एटा पूरा हमर कोर्ट आसी गला जो थरे की गोटे हमर जज रहिबे एंड वी हैव टू पुट आवर डिस्प्यूट पुट आवर केस इन फ्रंट ऑफ द जज हला सो जज ये जोटा की ऑन बायस डिसीजन नेबे बिहाफ ऑफ द अनबायस्ड डिसीजन टुवर्ड्स द इंडस्ट्री टुवर्ड्स द वर्कर एंड मैनेजमेंट बायस फ्री डिसीजन जो थरे की वर्कर और मैनेजमेंट से डिसीजन को मानिबा पय बाध्य देयर इज नो चॉइस एंड अल्टरनेटिव इन केस ऑफ द लेबर कोर्ट एंड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल नेशनल ट्रिब्यूनल पिला माने दिस इज द सब आगो स्टेट लेवल रे सॉल्व होबो सब अप टू इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हमरो स्टेट लेवल रे सॉल्व होबो बट गोटिए डिस्प्यूट जोटा की हमरो नेशनल लेवल रे सॉल्व होबो नेशनल ट्रिब्यूनल अंडर द बेसिकली द एठी हमरो कोन ना कंप्लीटली द सेंट्रल गवर्नमेंट द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट विल सॉल्व द डिस्प्यूट सेंट्रल लेवल को एटा चली जिवो अच्छा सेंट्रल लेवल रे नेशनल ट्रिब्यूनल रे को मैटर सॉल्व होबो पिला माने सेंट्रल लेवल रे नेशनल ट्रिब्यूनल रे से डिस्प्यूट सॉल्व होबो जो डिस्प्यूट बेसिकली दुईटा स्टेट रो डिस्प्यूट थिबो दुईटा स्टेट रो जेमति कि धर फॉर एग्जांपल मु कहबी नेशनल ट्रिब्यूनल रे को डिस्प्यूट सॉल्व होई परिबो दुईटा स्टेट रो डिस्प्यूट जेमति कि हमरो महानदी डिस्प्यूट आमे आ छत्तीसगढ़ हैला छत्तीसगढ़ आ आमे मिसिगिरी जो डिस्प्यूट चाली छै सेटा कोठी ग्रीन ट्रिब्यूनल नेशनल ट्रिब्यूनल ताको सॉल्व करिवो सेटा स्टेट रे सॉल्व होई परिबोनी कारण सेटा दुईटा स्टेट रो प्रॉब्लम हैला गोटे ऑर्गेनाइजेशन सब स्टेट रे रन करोउची ताहाले सेही टाइप रो जदी डिस्प्यूट आसला से कोठी कि जिवो नेशनल ट्रिब्यूनल को जिवो right so national tribunal means basically more than one state dispute more than one state means the problem is there that's the problem between the 2 to 3 state involved in that particular problem so that case will go to the national tribunal जोटा कि जज थिबे नेशनल ट्रिब्यूनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रे से सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा जिवो से सब डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करा जिवो सो थ्रू दिस द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैन बी सॉल्व्ड एठी जहां से डिसीजन देबे you have to accept it आउ ता छडा कोनोसी चॉइस आ अल्टरनेटिव नाही बुझी गलो कि पिला माने पूरा ना कोठी किछि डाउट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ओवर
पिला माने मैम ताले मैम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स पे ताले कोडा को सेटल डाउन होबो टू डिस्कस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल आउ लेबर कोर्ट हैला जेतेले आज्ञा। आपण माने जिबे माने कहार लेबर लॉ रो हैला सेठी लेबर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 रो शेष रे सब चैप्टर अछि हां चैप्टर रे कोन दिया जायछि वर्क कमिटी कोन हैंडल करिवो कंसलेशन ऑफिसर कोन हैंडल करिवो लेबर कोर्ट कोन कोन मैटर को हैंडल करिवो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को मैटर को सॉल्व करिवो ता सब दिया जायछि लिस्ट दिया जायछि सेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ताको डिजाइन करिछि हैला तो सेठी जायछि आपण रेफर करिवे जे को जिंसटा लेबर कोर्ट हैंडल करिवो को जिंसटा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हैंडल करिवो मेडिकल एग्जांपल रे कहिले जेमति कि फॉर एग्जांपल धर टर्मिनेशन रिलेटेड लेबर कोर्ट हैंडल कला जदि टर्मिनेशन रिलेटेड लेबर कोर्ट हैंडल कला ताहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेटा को करिवो नाही कारण सेटा लेबर कोर्ट ही ताको सॉल्व करिवो फॉर एग्जांपल बोनस बोनस किए कला इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ता माने सेटा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को ही से कोई केस रा जीवो सेटा लेबर कोर्ट को जीवो नाही सेटा पूरा लिस्ट अछि बुझिले ना से लिस्ट को Yes, ma'am. रेफर करिवे से लिस्ट को रेफर करिए पूरा देइछि पूरा गोटी गोटी करके लिस्ट रखिछि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 रो शेष रे चैप्टर आग अछि से चैप्टर रे से सब रखा जाय बुझिले ना पिला माने नेशनल ट्रिब्यूनल रो भी लिस्ट अछि से बुझिले ना पिला माने यस ना पूरा क्लियर ना यस मैम ओके आको ए अनुसार पिला माने मन रखिबो दया करी टिके आको कोन करिवो कहिलो ना आको टिके सुंदर भाबरे एक्सप्लेन करिवो मु जेमति कहिलो हां कोन हां स्क्रीनशॉट न देखेबे सेटा कोन घंटाडी होला सेई स्क्रीन रे थिली गोटे घंटा हे गला बोते सेई स्क्रीन रे थिली आ तुम स्क्रीनशॉट मैम जूम हे जायतिला फिर जो मुझे हे ହେଲା? गेला मैम थैंक यू हां हां bonus at 1965 industry के तो मैम हटे हाँ? एडजुडिकेशन एडी adjudication आसेबन एडी adjudication तो हमरो dispute हला ना adjudication को जिबा ना dispute industry रे धर bonus related dispute हला माने आमे जिबा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट थ्रू आमे सॉल्व करबा डिस्प्यूट को पिला माने धर जदि डिस्प्यूट हला रिलेटेड टू ट्रांसफर प्रमोशन टर्मिनेशन बोनस तापर हला ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड ए सब रिलेटेड जदि किछि भी डिस्प्यूट हला से डिस्प्यूट ता आमे जाइकिरी कोठी सॉल्व करबा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एई फार्मूला रे फास्ट रे आमे एडजुडिकेशन जिबा नाही मु कोन कहिले कोन बुझिलो फास्ट रे आमे एडजुडिकेशन को जाई परिन कोन तमरो डिस्प्यूट हला तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पळेबो ना कोन फास्ट रे तो तमरो जहा प्रॉब्लम हला तमे तमो प्रॉब्लम ता तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे जाई कि कहबो ना एरे इंडस्ट्री रिलेटेड तो फास्ट वर्क कमिटी को जिवो वर्क कमिटी पर कंसलेशन ऑफिसर बोर्ड ऑफ कंसलेशन तापरे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तापरे लेबर कोर्ट को जिवो एई थ्रू रो गोटे फार्मूला तमरो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हला Yes, ma'am. तो यस ए पेमेंट ऑफ बोनस ऑफ 1965 रे जेतेला आसिला बोनस दबो किए एम्प्लॉयर बोनस नबो किए वर्कर हु विल गिव द बोनस एम्प्लॉयर हु विल टेक द बोनस वर्कर बुझिला अच्छा बोनस ता केमिति दिया जिवो देखो हम एटी कोन डिस्कशन करिबा इंट्रोडक्शन टू पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हैला एम्स टू पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एलिजिबिलिटी की को ध्यान रे सब गोटे गोटे वर्ड सुनिबो एलिजिबिलिटी फॉर बोनस डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बोनस मिनिमम बोनस मैक्सिमम बोनस मोड एंड टाइम लिमिट फॉर बोनस डिडक्शन परमिसेबल फॉर बोनस सेटअप एंड कैलकुलेशन ऑफ बोनस
एतिकी हला तुम बोनस पेमेंट आ बोनस एक्ट 1965 रे मन रखिब हला कोन कोन कहूची ध्यान रे सुनी सुनिका जीव पेमेंट आ बोनस एक्ट 1965 the organization the payment of bonus act 1965 aims to providing bonus. The employer will provide bonus to the employee based on the productivity or profit of the establishment. कौन कहली मु एठी ऑर्गेनाइजेशन रे एम्प्लॉयर बोनस दबो वर्कर को केमिति नबो दबो ना बेस्ड ऑन दी प्रॉफिट एंड प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन रे प्रॉफिट अनुसार प्रोडक्टिविटी अनुसार सी बोनस प्रोवाइड करिबो हैला बुझिला प्रॉफिट हैलानी बोनस दबो ना नाही पिला माने ऑर्गेनाइजेशन रे प्रॉफिट ना हाँ हाँ वेरी गुड ना 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 नहीं ना नहीं दबो प्रॉफिट हबनी तमर प्रॉफिट न हले Minimum तमे bonus. बुझिबो मिनिमम बोनस तो हैला पिला माने गोटे सेकंड रे म आछि गोटे सेकंड हेलो स्टूडेंट्स यस मैम हाँ स्लाइड देखा जाउची ना आगे मैम आगे हो ना ओके तो चलो हैला एठी सी द पेमेंट ऑफ बोनस केमती दिया जीवो ऑर्गेनाइजेशन केमती बोनस प्रोवाइड करिवो ना बेस्ड ऑन द प्रॉफिट एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मोर प्रॉफिट मोर बोनस लेस प्रॉफिट लेस बोनस बट यू हैव टू प्रोवाइड बोनस बोनस तुमको दबा को पड़िबो ही पड़िबो कहबी आकु सब गोटे गोटे कहि करता मु जीबी ध्यान रे सुनु था तो कोन हैला ए देखो गोटे स्लाइड रे मु लिखी छी अमेंडमेंट्स ऑफ बोनस एक्ट 1965 केमती अमेंडमेंट हे का आसी जते बेले 1965 रे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट आसिला केते बेले आसिला 1965 एट दैट टाइम द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडा खाली सुनी तो आगो को बुझिबो एडा खाली देखि तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोन थिला ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1600 इट मींस 1600 1600 जो लोक 1600 टंका पाउथबो मासको सीए बोनस पई एलिजिबल थिला तार वे सेलिंग कोन थिला वे सेलिंग माने ला कोन ना कैलकुलेशन ता केमिति होबो ना 750 टंका रे होबो सेटा केबे थिला देखो जेमति कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी बढ़ी जाउची सेमति बोनस ता बढ़ी बढ़ी जाउची हैला 1985 अगेन पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट अमेंडेड अमेंडमेंट आउट रहला 1985 रे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़िला ता माने बोनस बढ़िबा दरकार कोन मु 500 टंका पाउथली 1948 रे 1948 रे माने मु एना भी 500 रे बंचिबी ना कोन सेतेले 5 पैसा चलतुला एना कोन चलुची तो से अनुसार कॉस्ट ऑफ लिविंग जेमती बढ़ुची हमर वेज बोनस सब ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड सेमती सब बढ़िबा दरकार तो से अनुसार बढ़ुची अमेंडमेंट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो 1985 रे कोन हैला the payment of bonus act 1965 eligibility criteria was 2500 and the calculation on the basis of 1600 कोन एडा खाली देखि तो म आगु को बुझेबी हैला सेडी बुझिबो
1995 again the payment of bonus act amendment hela, again amendment hela amendment ही केते हला कहा को एलिजिबल हला ना जो लोको those persons जो लोक माने मासको 3500 सैलरी पाउथले वेजेस पाउथले कैलकुलेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2500 again payment of bonus act amendment hela 2007 रे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10000 wage calculation bonus calculation 3500 2015 लास्ट अमेंडमेंट हेची आउ तापछु अमेंडमेंट हेनी हबो 2024 हे गला ना एने 25 आडू को देखिबो एटा अमेंडमेंट आउट रे अगेन हबो कारण कॉस्ट ऑफ लिविंग पूरा बढ़ी गलान हैला तो कोन हैला 2015 अगेन अमेंडमेंट लास्ट अमेंडमेंट रे बोनस एलिजिबिलिटी केते अछि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 21000 एंड द कैलकुलेशन ऑफ बोनस हबो केते रे 7000 एई अनुसार 1965 टू 2015 बोनस रो अमेंडमेंट हेची बोनस एक्ट 1965 रो अमेंडमेंट हेई आसीची हैला मने रखिथिबो एटा आको मो कहूची अच्छा एम्स तो गला ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड प्रोडक्टिविटी केमति हमें बोनस को प्रोवाइड करिवा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मोर प्रॉफिट मोर प्रोडक्टिविटी मोर बोनस लेस प्रॉफिट लेस प्रोडक्टिविटी लेस बोनस बट यू हैव टू प्रोवाइड बोनस टू द वर्कर्स अच्छा एप्लीकेबिलिटी एटा कोठी कोठी एप्लीकेबल हला दिस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट it applied every factory every establishment where 20 or more persons are working प्रत्येक फैक्ट्री रे प्रत्येक एस्टाब्लिशमेंट रे जोथरे कि 20 जन रु अधिक लोक काम हां 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 ओ को बाबू हां को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सुबा गलानी कोन कहला ग्रीन ट्रिब्यूनल हां हेलो हाँ बाबू मो मो पार्टी एमती सुबा जाउची कहले सल्ला कथा कोन कहला ग्रीन ट्रिब्यूनल हां नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हां ग्रीन ट्रिब्यूनल हां हां आज्ञा सेटा हम कोन दिन पर सेटा ग्रीन ट्रिब्यूनल सुना आज का डेट रे हमर ग्रीन टा को ग्रीन एनवायरनमेंट ता माने कोन जनरली हमें कहा प्रति ग्रीन एनवायरनमेंट का यूज करछे जोथिरे कि हमर जेते पारिबो हमें गछ लगेबा जेते पारिबो हमर एनवायरनमेंट को मेंटेन करबा हैला जदी से रिलेटेड कोनोसी हैला ग्रीन ट्रिब्यूनल ता जेते सब आसीबो हमर कोन कहलो हमर माउंटेन रिवर्स हां एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स ए सब आको ग्रीन ट्रिब्यूनल को जीवो बुझिला ना तो ए सब मैटर जदी किछि प्रॉब्लम हमर ग्रीन एनवायरनमेंट पर हमें मेंटेन करछो इन दिस 24th सेंचुरी सो ए सब जेते सब प्रॉब्लम हैला एनवायरनमेंट रिलेटेड मन रखिबो जहां सब प्रॉब्लम हैला से सब ग्रीन ट्रिब्यूनल हैंडल करिवो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जोटा कि केसटा दुईटा स्टेट रो थिबो दुईटा स्टेट रो के प्रॉब्लम होतो मोर देन टू स्टेट गोटी स्टेट रहले सेटा हमर निज स्टेट निजे सॉल्व करिवो मोर देन टू स्टेट धर हमर आंध्र प्रदेश रो आ वेस्ट बंगाल रो प्रॉब्लम हमर छत्तीसगढ़ रो प्रॉब्लम हैला छत्तीसगढ़ वेस्ट बंगाल रो प्रॉब्लम धर ए सब रिलेटेड को कोठी सॉल्व होबो एनवायरनमेंट रिलेटेड सिचुएशन को ग्रीन ट्रिब्यूनल बुझिला ना ओके ओके थैंक यू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ताको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहा जाय ए हमर जो हमर महानदी ये मैटर सब सेठी अछि ग्रीन ट्रिब्यूनल हैला तो चलो एना कोन हैला हां एप्लीकेबिलिटी काहा को एप्लीकेबल पिला माने कहली ना समस्त को एप्लीकेबल जेमति कि एवरी फैक्ट्री और अदर एस्टैब्लिशमेंट जो सब फैक्ट्री एज पर दी फैक्ट्री एक्ट 1948 फैक्ट्री अंडर जो जो माने जाउचंती से समस्त को पेमेंट आ बोनस एक्ट एप्लीकेबल हैला ता छडा एवरी अदर एस्टैब्लिशमेंट आउ सब अदर एस्टैब्लिशमेंट आउ जते सब अछंती समस्त को बोनस एक्ट एप्लीकेबल हैला तो केते लोक सेठी काम करतबा निहाती दरकार दैट फैक्ट्री एंड एस्टैब्लिशमेंट नॉट लेस देन 20% मिनिमम 20 जन काम करथिबे 20 जन जति लोक से फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट आज पर दी फैक्ट्री एक्ट तो 20% तमे जानि छे ना हैला आज का डेट रही जाइए तो as per the factory act and other establishment where 20 or more persons are working the payment of bonus act 1965 can be applicable अच्छा जदि किछि जगह रे 10 जन मध्य काम करूचंती एनी डे इन अकाउंटिंग ईयर 10 जन मध्य काम करूचंती 20 जन नो अप टू 10 मींस 10% 10 or more person सेही जगह रे मध्य जदि गवर्नमेंट चाहिबो if the government want to implement bonus act in that particular establishment where 10 or more persons are working
then the government will notify that particular establishment, and within 2 months the bonus act can be applicable. माने कौन कहली ध्यान रे सुन सब फैक्ट्री को एटा एक्सटेंड हला 1965 रे as per the factories act 1948 अनुसार सब एस्टाब्लिशमेंट को एटा लागू हला बोनस एक्ट 1965 जो थिरे कि 20 जन रु अधिक लोक काम करछन्ती से एस्टाब्लिशमेंट मान हला किंतु धर गोटी एस्टाब्लिशमेंट रे 10 जन मैडम काम करछन्ती सेही बोनस एप्लीकेबल हबो ना नाही जदी गवर्नमेंट चाहिबो ही सेही पर्टिकुलर एस्टाब्लिशमेंट रे मु बोनस को इम्प्लीमेंट करबा को चाहूची 2 मास रो नोटिस सेमान को दबो देकी सेडी से बोनस इम्प्लीमेंट करि पारिबो एडा पावर अछि कहां रो गवर्नमेंट रो so basing on this once bonus act will applicable in that particular establishment means it will applicable forever जो पर्यंत फैक्ट्री अच्छी जो पर्यंत इंडस्ट्री अच्छी इंडस्ट्री क्लोजर हैला पर्यंत ताला पड़िला पर्यंत इंडस्ट्री बोनस दबा पई बाध्य once applicable means applicable forever मने रखिबो बोनस ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड सब once applicable means it will applicable forever आउ ताकू चेंज करि परिबो ना हैला गला तापरे चल को अच्छा एटी गोटे थिला हां देखो को एस्टाब्लिशमेंट को एग्जम्प्टेड को एस्टाब्लिशमेंट माने इन व्हिच एस्टाब्लिशमेंट दे आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस जोटा कि एग्जम्प्टेड लिस्ट रु से माने गले को एस्टाब्लिशमेंट ना एस्टाब्लिशमेंट स्पेसिफिकली आमे जदी कहिबा LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पूरा लिस्ट अछि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 रे व्हिच एस्टाब्लिशमेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस को माने बोनस देबेनी से भीतर LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एस्टाब्लिशमेंट हां रेड क्रॉस सोसाइटी यूनिवर्सिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जोटे कि हमें पाउनु टोटली बोनस रो हमें गोटे पैसा भी हमको आसेनी केबे भी कि हमें हमर एक्सपेक्टेशन भी नाही कारण हमको एलिजिबल ही नाही हमें सहीरे neither university nor educational institutions right hospitals ए जत्ते सब एठी तमरा लिस्ट दिया जाईची एई एस्टाब्लिशमेंट माने बोनस देबे नाही कारण हमर प्रोडक्शन कंट्रोल ना होची तो दिस एस्टाब्लिशमेंट दे विल नॉट एलिजिबल फॉर बोनस आपको छाडला परे डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिफरेंट फैक्ट्रीज एंड डिफरेंट अदर एस्टाब्लिशमेंट ए लिस्ट को छाडला परे ए अपार्ट फ्रॉम दिस लिस्ट और अदर एस्टाब्लिशमेंट दे आर एलिजिबल फॉर बोनस माने बोनस दबा पई बाध्य हैला तापरे चलो एलिजिबिलिटी फॉर बोनस किए बोनस पाया पई योग्य मु तो योग्य नु कारण मु यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे मोर तो पूरा मूलरू से कटि गली मु छाड़ा हैला धर तुम फैक्ट्री रे काम करछ इंडस्ट्री रे काम करछ तो गुटे टेक्सटाइल इंडस्ट्री रे काम करछ हैला तमे बोनस पाइबो ना पाइबोनी पाइबो केमिति पाइबी मैम ना केमिति पाइबी एलिजिबिलिटी हैला the person have to those persons are getting every employees are eligible for bonus mane rakhibo a person may be skilled unskilled semi skilled clerical managerial supervisor manual से जो category होची हो लेखा है हला but the person who is getting up to 21,000 per month जे रिसीव करूची 21,000 per month basic plus DA basic और DA मिसिकिरी जे मासु को 21,000 टंका up to not more than 21,000 जो माने मासु को 21,000 रिसीव करचंती बेसिक DA से माने हेले बोनस पाई एलिजिबल दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया समस्त एलिजिबल बट क्राइटेरिया हला 21,000 पाउथबे हला ता छडा the person have to work in that particular establishment in that particular accounting year say accounting year हमर केबुडू स्टार्ट है केबुडू क्लोज होए रे पिला माने एप्रिल स्टार्ट है मार्च एंड में हमर 1 एप्रिल स्टार्ट है कि 31 मार्च रे शेष हुए वेरी गुड तो सेई लोकटा जदी 1 एप्रिल टू 31 मार्च भितरे 30 दिन काम करथिबो 30 वर्किंग डेज एटलीस्ट 30 वर्किंग डेज इन दैट ईयर को ईयर रे अकाउंटिंग ईयर रे 30 दिन मिनिमम काम करथिबो
ताहेले मु वर्ष सारा आसिकी काम करछि 12 मास आगे हैला तमे 30 दिन काम करछ तमे जति बोनस पाइबो मु सेति बोनस पाइबी ना सेति पाइबिनी तमे तमे कम पाइबो मु अधिक पाइ कैलकुलेशन अनुसार हैला बट क्राइटेरिया हैला कि 30 दिन मिनिमम काम करथिबो ताहाले से एलिजिबल हबो एतिके मन रखिबो इथरे सब लोक बोनस पाइबे स्किल नॉन स्किल सेमी स्किल मैनुअल क्लरिकल सुपरवाइजर समस्ते को माने जो माने अप टू 21000 पाउथिबे मास को वेजेस बेसिक आउ डियर जो माने सही अकाउंटिंग ईयर रे 30 दिन मिनिमम काम करथिबे से एलिजिबल हबो बोनस पाइ हैला तापरे चलो एम्प्लॉयड वाज डिस्क्वालिफाइड फॉर बोनस डिस्क्वालिफाइड तमे बोनस पाइबनी काहे पाइबनी मैम आपण कहिले पर आईडी पाइबी बोली पुनी काहे पाइबनी पाइबनी काहे पाइबनी if the employee is eligible for bonus तमे बोनस पाइ eligible हैला क्वालिफाई करूछ बोनस पाइ you are eligible for bonus but तमे 21000 भी 20000 पाउछ तमे हला अनस्किल्ड वर्कर तमे हला 30 दिन काम करछ 30 दिन कोन वर्ष तमाम काम करछ फिर भी तुमको बोनस दिया जीव नै काहे कि दिया जीव नै ड्यू टू तमे कोन कल ऑर्गेनाइजेशन रे बिकॉज़ you did some misconduct you did some unethical illegal practice in the organization it may be fraud violence theft misconduct ए सब करिछ इंडस्ट्री रे जदि ए सबरु किछि गोटे वर्कर कला इंडस्ट्री रे देन द एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल टू पे बोनस एम्प्लॉयर एठी लायबल नुह बोनस प्रोवाइड करबा पई तुमको यू आर डिस्क्वालिफाइड फॉर द बोनस तापरे तमे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अनुसार जीवो केस करिवो डिस्प्यूट करिवो केस करिवो जति तमे पाइबो जति तमे जितिलो बोनस पाइबो न जितले बोनस पाइबोनी तुमको फ्रॉड कहिगिरी बोनस दिया हलान तापने तमे कोन करिवो फ्रॉड तमरो प्रूफ है कि हैनी ताहले मु इंडस्ट्री को केस करी जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अंडर रे केस कर हैला तो चलो मिनिमम सरकारी बोनस करिबो ना हला कुर्मा करिबो हां सब एडी ही कर ऑन क्लास नहीं सब कर हैला अच्छा मिनिमम बोनस केते दिया जीवो मिनिमम बोनस हैला द ऑर्गेनाइजेशन मे बी मेकिंग सुन एथि पिला माने गोटे कथा कहि दोची तापर मिनिमम बोनस कहबी देखो every organization have to provide bonus once bonus applied in that particular establishment it will applied forever it will applicable forever up to closure of the industry but bonus is not compulsory a organization who those organizations are newly established newly set up जो organization ता नुआ रे रहिथिबो सेही ऑर्गेनाइजेशन को अप टू 5 इयर्स 5 वर्ष पर्यंत बोनस एक्ट एप्लीकेबल हबो नाही ना मिनिमम लागिबो ना मैक्सिमम लागिबो ना सेटन लागिबो ना सेटअप लागिबो ना कैलकुलेशन लागिबो किछि लागिबो कारण 5 वर्ष तार रिलैक्सेशन पीरियड हैला अप टू 5 इयर्स फॉर द न्यू एस्टैब्लिशमेंट न्यूली सेटअप करिछि ओय तार तो प्रोडक्शन ही हेनी से तो मूलरो सेटअप ही करिनि तो मो बोनस आन के कोडु दबो लाभ हले तो बोनस दबो बोनस ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड प्रोडक्टिविटी प्रॉफिट प्रोडक्टिविटी केबे हां मैम आमर तो मु गुटे जगह रे काम करथिली से गोटे वर्ष रे मते बोनस दउथला देई पारिबो किंतु it is not compulsory it is the basically it is not statutory it is not compulsory for the employer if the employer wanted to provide bonus to satisfy to motivate the worker that is the kindness and that is the greatness of the employer towards the worker so kindness greatness ame kahiba but it is not compulsory it is not mandatory up to 5 years after 5 years once 5 years hei gala mane bonus act automatically लागू होई जिवो मैम से जगह रे 20 जन काम करथिले हैला बोनस एक्ट लागू हैला तापरे कोन हला सेटा एना 15 जन काम करछिन कोन बोनस पे लागू हबो वंस लागू माने से लागू आउ से 15 जन काम करन तो 20 जन काम करन तो 500 जन काम करन से अकोन थरे माने इंप्लीमेंट करथबो पुनी काटथबो पुनी डिलीट करथबो आउ तो इंडियन आउ तो गवर्नमेंट को किछ काम धंदा नै ना से तो इंप्लीमेंट करथबो पुनी रिमूव करथबो पुनी इंप्लीमेंट करथबो 10 जन हो गेले पुनी 15 जन हो गेले ये करथबो पुनी 500 जन हो गेले पुनी तार 10 जन हो गेले अरे कोन तमर लागिला माने से लागिला फॉरएवर तो पर्यंत तमे आ तम इंडस्ट्री अछि हैला तो मिनिमम बोनस केते दबो 5 वर्ष पर तमे एलिजिबल क्राइटेरिया को आसी गेलो मिनिमम बोनस केते दबो ऑर्गेनाइजेशन मे बी मेकिंग प्रॉफिट मे बी फेसिंग लॉसेस लाभ कर क्षति कर जहा करूचो कर मर हज जहा कर केते दबो 8.33% मिनिमम बोनस
You have to pay to your workers. लाभ हो क्षति हो ऑर्गेनाइजेशन भासी जाऊ जहां करछो करो यू हैव टू गिव 8.33% ऑफ बोनस कहार 8.33% of the wages and salary of the employee during the accounting year. गोटे accounting year रो wages salary रे मोर जहां wages salary छु मागो कहबी हैला तार 8.33% प्रोवाइड तमे करबा पई बाध्य हैला मैक्सिमम बोनस ताले केते दबो maximum bonus if the organization making highly profitable organization making profit and the organization is basically there in a best condition then the organization can provide up to 20% bonus ma'am 20% रो कोन अधिक दे परिबोनी दे परिबो दउनो सब आगे दे दियो तम एम्प्लॉय को सब दे दियो किए मना करछि तम एम्प्लॉय तम ऑर्गेनाइजेशन तम पैसा तमे दे परिबो बट तमे कह प्रॉफिट हेले भी मु 5% प्रॉफिट हेले भी मु 8.33 देबी तमे कह प्रॉफिट हेले भी मु 10% ही बोनस देबी मु अधिक देबिनी सेही केस रे डिस्प्यूट हबो सेही केस रे डिस्प्यूट हबो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अंडर एक्ट रे तमरो डिस्प्यूट चलिबो तो मेकिंग इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज मेकिंग मोर प्रॉफिट देन द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू प्रोवाइड मैक्सिमम 20% बोनस टू द वर्कर हैला तापर चलो जुडी न बुझिबो पचारिबो मोड एंड टाइम ऑफ पेमेंट केते बेला हमें बोनस प्रोवाइड करिया को मोड रे को टाइम रे सी द ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोवाइड बोनस हां मोड हैला देखो लिखिची इट शुड बी पेड इन कैश बोनस ता केमते दिया जिवो कैश रे दिया जिवो हैला कैश आकार रे मैं मैजिक डेट तो कैश ट्रांजैक्शन नै सुनो 1965 रे कैश ही थिला तो सेतेले कैश को जाउथला एइना भी कैश ही लेखा जाईची ऑर्गेनाइजेशन जे चाहबो किछि भी ट्रांसफर करि परिबो हैला and within 8 months from the closing of the accounting year ro close hobar 8 मास भितरे and the bonus ta mane accounting year kebe close होला रे पिला माने मार्च रे तापर 8 मास काउंट कर देबो अप्रैल मई जून नवंबर रो एंड पर्यंत टाइम अछि तमे बोनस सेटल करबा पई and the bonus will provide once in a year annual bonus annual वर्षरे थरे दिया जो 10 थर मागले दिया हबनी वर्षरे थरे दिया जिवो annually दिया जिवो within 8 months भितर तमे तो कहू ना कि मैम हम ऑर्गेनाइजेशन कोन करछि दुर्गा पूजा बोनस दोछि पूजा बोनस बोले किछि गोटे नाही बुझिलो ना पिला माने पूजा बोनस किछि नाही बोनस एक्ट पूजा बोनस बोले किछि गोटे करिनु हां कस्टमरी बोनस बोले किछि नाही तो कौन करा जाई छै एठी तो दिवाली देखो 8 मास भितर हमर दिवाली आसी आ दुर्गा पूजा आसी एई 8 मास भितर हैला तो ऑर्गेनाइजेशन कोन करे लोक को खुशी करिया पई बोनस ला इधर दिवाली रे दिए नहले दुर्गा पूजा रे दिए तो लोक माने कोन हेबे दुर्गा पूजा दिवाली रे आउरी खुशी के से माने भलो शॉपिंग करि परिबे घर पई किछ गोटे करि परिबे तो से माने गोटे स्वीट पैकेट देला आउ बोनस आकार रे तांकर पैसा दे देला so they will more motivate more satisfy more employer like the best employer in the world हैला तो एई जो खुशी करया पई जनरली से कस्टमरी बोनस न थाए पूजा बोनस बोली किछि गोटे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करिनि आज पर्यंत तो से टाइम दा से पीरियड ता से टाइम दा से सेति पई दिया जाय बोनस ता दिवाली आउ पूजा हैला तो एनुअली आको दिया जे तापे कोन होला पिला माने देन आसिला एई जो हमें बोनस दबा the employer will provide bonus the employer have to maintain register obviously कोन register master roll को follow करिवो किए केते दिन आसीची कार केते दिन प्रेजेंट कार केते दिन एब्सेंट हां जने 12 मास आसी केते बोनस पाइबो जने 30 दिन आसी केते बोनस पाइबो ए सब किछि एनालिसिस एदी करा जिवो एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बोनस हैला तापर चलो कोन कहूची मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग बोनस रा पेनाल्टीज तो तमे न देले पेनाल्टीज दबो छाडो कैलकुलेशन ऑफ बोनस आमे बोनस ता केमती कैलकुलेशन करिबा ना बेस्ट सेट ऑन एंड सेट अप कहूची एटी सेट एंड सेट अप रे गोटे जिंस कहबे एटी मन रखिबो कैलकुलेशन ऑफ बोनस ऑन द allocable surplus set on and set up हैला सुनो पिला मान बोनस हमें केमती दबा ना बोनस ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन अनुसार हमें बोनस का प्रोवाइड करी एलिजिबल किए जे 21000 मास को पाउछ
हैला अच्छा जदि 21,000 मैडम पाउची ऑर्गेनाइजेशन बोनस केमती प्रोवाइड करिवो ना ऑर्गेनाइजेशन बोनस प्रोवाइड करिवो आज पर दी अलोकेबल सरप्लस कौन मैडम ध्यान रे एठी खाली टिके सुनी दबो पिला माने अलोकेबल सरप्लस हला पिला माने ऑर्गेनाइजेशन कौन कला प्रॉफिट कला ग्रॉस प्रॉफिट पूरा प्रॉफिट आसीगला वर्ष हैला ग्रॉस प्रॉफिट आसीगला माइनस एंटायर लायबिलिटी कौन ऑर्गेनाइजेशन रो मैम लायबिलिटी हैला जीएसटी देला टैक्स देला डे टू डे एक्सपेंसेस जिते सब दरकार वर्ष सारा पाई डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हाँ जिते प्रकार एक्सपेंसेस ऑर्गेनाइजेशन पाई सब बाहर कर देला तामाने कौन है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एंटायर लायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंटायर ईयर पाई इक्वल टू अवेलेबल सरप्लस आसिला अवेलेबल सरप्लस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एंटायर लायबिलिटी इक्वल टू अवेलेबल सरप्लस रो 60% जदि से इंडस्ट्री टा बैंकिंग रिलेटेड 60% कौन करिवो अलोकेट करिवो बैंकिंग इंडस्ट्री पाई 67% ई बाय अदर इंडस्ट्री तर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बैंक नहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री ताले 67% से अलोकेट करिवो बोनस दबो बोली ए जो 60% 67% अलोकेट कला सेटा कोन आकार रे दबो बोनस आकार रे से प्रोवाइड करिवो बेसिक ऑन दिस कैलकुलेशन करे हैला ए जो 67% अलोकेट कला बोनस पाई बोली मु हेली गोटे वर्कर मु कोन करूची 21,000 टंका हला मोर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई एम गेटिंग 20,000 पर मंथ एज ए वेजेस हैला ता माने मो बोनस ता केमती कैलकुलेशन हबो कोन 20,000 रे मते मैडम बोनस ता मिलिबो कि 20,000 ऊपर ना वेज सेलिंग हला 7,000 मेटी बुझैथिली फास्ट रे अमेंडमेंट जो ही आछि 21,000 हला वेज सेलिंग केते रखि छैना 7,000 ता माने मोर बोनस ता केते कैलकुलेशन हबो 7,000 रे कैलकुलेशन 7,000 टंका रे मो बोनस ता कैलकुलेशन जदि मु 7,000 तळु को पाउची 7,000 तो तळु को आज से वर्ष मु 7,000 तळु को थाई पारे बहुत कम दिन आसीची ताहले मु एग्जैक्ट बोनस मिल जिवो एग्जैक्ट अमाउंट मिल जिवो जति कि दिन रो सति कि दिन रो बोनस मिल जिवो जदि मोर बेसिकली हाँ 21,000 I am getting and my bonus must be calculated on the basis of 7,000 well selling गला 7,000 7,000 टंका रे बोनस का कैलकुलेशन पिला माने हबो तो 7,000 टंका रे बोनस तेले कैलकुलेशन हबो 7,000 हैला केते मास आछो केते परसेंट बोनस दोची ऑर्गेनाइजेशन केते दोची 20% तो 20% into 12 माने 12 मास आछो हैला जहा आसिला सेटा हला तमरो बोनस सेही तमरा आसीबो केते 7,000 7,000 टका खंडा आसीबो गोटी वेज आसीबो तमरो वेज सेलिंग रो गोटी वेज आसीबो हैला सेटा हला तमरो बोनस सेति कि तमको बोनस आकार दिया जिवो बुझिलो कि पिला माने बुझिलो ना बुझिलो यस मैम बुझिला क्लियर तो गर्ल्स क्लियर हैला गर्ल्स माने Yes, ma'am. क्लियर मैम हैला Yes, ma'am. अच्छा Yes, ओके ma'am. एठी गोटे जिंस मन रखिबो से सेटम सेटअप कोन पिला माने ध्यान रे मन रखिबो सेटम सेटअप ता सर दीपक सर आसिले नी कि हां सर आसिले मते कहइबो आगे मैम सर हाँ। आसिना हां ना आसिना मु कहली दीपक को सर आसिले मते कहइबो हैला ना सेटम सेटअप हैला हमर सर कहले कि सर अच्छु सर अछंती दीपक सर अच्छु डीडीसी मैनेजमेंट होस्ट अच्छु हाँ दीपक अछि हैला तो सेटम सेटअप हाँ हैला तो सेटअप हाँ ना सेटअप कोन पिला माने एटा टिके ध्यान रे सुनिबो पिला माने घर हमरो 67% हम अलोकेट कर देला आज बोनस हैला 67% अलोकेट करले
हमर बोनस अमाउंट हला 5 लाख एग्जांपल मु कहूची एग्जांपल गोटे दोची आपको सुंदर भाबरे ध्यान दे सुनो सेट ऑन सेटअप मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया पेमेंट आ बोनस आक आमे 67% allocate कले बोनस allocable surplus हमरा आसी गला 67% ता फॉर एग्जांपल हमरा 5 लाख टंका होची बोनस 5 लाख होची 5 लाख आमे बोनस देई परिबा वर्कर माने हैला 5 लाख आमे बोनस दौ दौ कते हमर 20% दे परिया कारण हमर लाभ होईची 20% आमे देई 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 केते देले समस्त को 20% दौ दौ हमर बोनस हमर पैसा 5 लाख रो केते सरिला 3 लाख सरिला आउ केते लाख रहिला 2 लाख रहिला आर अछि गोटे कैलकुलेशन अछि 10 वर्ष पर्यंत एटी पॉसिबल ना सेति पई थ्योरी रे कहूची सुन हैला 3 लाख सरिला बोनस 67% एलोकेट कलो 5 लाख हैला तमरो टोटल अमाउंट बोनस तमे देई परिबो 5 लाख तमे लोकन को दौ दौ 20% तमरो 3 लाख सरला 2 लाख बळेला से 2 लाख कोन करिवो 2 लाख मन एम्प्लॉय नै जिवो ना 2 लाख भी बांटी दबो ना से 2 लाख को कोन करिवो कैरी फॉरवर्ड कर दबो आर वर्ष को that 2 lakhs you can carry forward coming up for coming successful coming 4 year hela allocable surplus if exceed the maximum amount of bonus allocable surplus if exceed the maximum amount of bonus then the excess amount it can be carried forward for coming 4 year kete excess amount asla 2 lakhs excess amount asla you can carry forward that amount for coming 4 year 4 वर्ष पर्यंत सेटा carry forward हे परिबो आर वर्ष को कोन हैला ना ने कमिंग ईयर को तमरो लाभ हेलानी हैला जदी लाभ न हैला त कोन करिवो ए 2 लाख टंका जे carry forward हे केला ताको तमे यूज कर परिबो तो आर वर्ष को भी लाभ हैला तमे कोन करिवो ए 2 लाख से 4 वर्ष सेमति रहिबो तमरो लाभ हे चलीची तमाने कोन करिवो 4 वर्ष परे ए 2 लाख टा लैप्स कर दब लैप्स करी कोन जिवो मैम लैप्स करी एम्प्लॉय नै जिवो हैला समझ जदी ए वर्ष रो 2 लाख लाभ होला आर वर्ष को मध्ये लाभ होला सेटा मध्ये कमिंग 4 वर्ष पई आ तापर वर्ष को लाभ होला तापर जते सब एक्सेस अमाउंट कमिंग 4 वर्ष पई हमके 4 वर्ष पई सब आग हे जिवो जो 4 वर्ष हे जाउतबो सही 4 वर्ष रे सही अमाउंट टा लैप्स कर दोउ 4 वर्ष रे अमाउंट टा लैप्स हो जिवो 4 वर्ष ला माने से अमाउंट लैप्स हो जिवो लैप्स ही कर जिवो एम्प्लॉय नै जिवो से पैसा हैला आपको कहला सेट ऑन the success the coming 4 year the excess amount will carry forward for the coming 4 year that we can call as a set on now come to the point set off means what suppose in a 1 year in a particular year the organization facing heavy losses organization heavy loss face kala hela loss mane to completely हमर allocable surplus अछि माने अपन तो लायबिलिटी पय नथिबो allocable surplus कोड अछि हैला and the carry forward amount is also not there certain amount is also not there certain amount मध्ये नाही whether the organization provide bonus or not yes once applicable means applicable forever मु कहि स्टार्टिंग रो एही कोन करिवो organization bonus दबो कोउठु दबो मैम तब तो नहीं किछि certain amount भी नहीं carry forward amount भी नहीं organization facing heavy losses the employer have to pay bonus केते दबो the organization facing heavy losses minimum 8.33% दबो bonus minimum 8.33% दला कोउठु धार करी के आनिला 8.33% दला coming year को तापर ई वर्ष रे कोन हैला धार करी केते आनला आमे जदी 8.33% दोछ धरो 1,50,000 टंका 1,50,000 टंका धार करी के आनी के बोनस देला कमिंग ईयर को लाभ हैला तापर वर्ष कोन हैला लाभ हैला कोन करिवो ना द एम्प्लॉयर फर्स्ट विल रिपे दैट अमाउंट को अमाउंट जो 1.5 लाख टंका बाकी आनथिला फर्स्ट द एम्प्लॉयर विल रिपे दैट अमाउंट borrowed by the employer in a different source then rest of the amount the employer can allocate as a bonus this process we can call as a set off ए जो प्रोसेस रा को हमें कोन कहिबा पिला माने सेट ऑफ बोली कहिबा
सेट ऑन सेट ऑफ बुझीगल yes or no ना किछि बुझिलनी मैम सेट ऑफ टा मत आउट टिके प्लीज मैम सेट ऑफ हैला organization facing heavy losses this year धर ए वर्ष हैला organization ए accounting year organization facing heavy losses no allocable surplus किछि पैसा लाभ हैला organization से बोनस दबा पई कंपलसरी दबो ही दबो हैला कैरी फॉरवर्ड अमाउंट भी किछि नाही सर्टेन अमाउंट जोटा कि कैरी फॉरवर्ड ही आस्ता है पैसा से पैसा भी किछि नाही जीरो पूरा अकाउंट खाली ऑर्गेनाइजेशन कौन करिवो से जो पैसा ताहले केते दबा बोनस हाउ मच अमाउंट वी हैव टू पे ना मिनिमम 8.33% वी कैन पे एज ए बोनस 8.33% हमें बोनस आकारे दबा केमिति दबा मो पाखे तो पैसा नाही लाभ तो हेई नहीं कैरी फॉरवर्ड अमाउंट तो किछि नाही नो आई हैव टू बोरो सच अमाउंट 8.33% रे केते होउची रे 1.5 लाख टंका सारा हमें बोनस दबा 1.5 लाख टंका 1 लाख एग्जांपल मु कहूची हैला 1.5 लाख 5 लाख 10 लाख 8.33% देते ही पार हैला दैट अमाउंट आई कैन बोरो इन डिफरेंट सोर्स मो ताको आनिबी मो फ्रेंड रो धार करी के आनी पारे नले बैंक रो आनी पारे नले मो पर्सनल अकाउंट रो मु देई पारे हैला सो सेई जो अमाउंट मु देबी कहा को वर्कर को आई विल गिव एज ए बोनस दैट कैन कॉल्ड एज ए सेट ऑफ अमाउंट बुझिलो ना ओके मैम यस यस हैला अच्छा धर सेट ऑफ अमाउंट दे देलो आनी कि धार करज करी आनी कि पैसा दे देलो आर वर्ष को बोनस लाभ होला आर वर्ष ऑर्गेनाइजेशन बहुत लाभ कला ता माने कोन करिवो तमे 20% कोन बोनस दे दबो ना तमे कोन करिवो 8.33% ही दबो काहे कि ना जो पुराना बाकी आनथिलो ताको सुझिबोनी कि जाड आनथिलो जति को लाभ कला अलोकेबल सरप्लस जहा आसिला आगे से पुराना बाकी सुझिबो तापर सुझिबो बाकी नले इंडस्ट्री बुडी जिवो फर्स्ट यू हैव टू रिपे दैट अमाउंट जोटू तमे बोरो करथिलो दैट अमाउंट व्हेन यू बोरो द अमाउंट दैट फर्स्ट यू हैव टू रिपे दैट अमाउंट देन रिपे करसाला परे तापर कोन करिबा देन रेस्ट अमाउंट यू कैन प्रोवाइड एज ए बोनस तापर रेस्ट अमाउंट को तमे बोनस कहि के प्रोवाइड करि पारि सेडी कोन करंती वर्कर्स माने डिस्प्यूट करन कोन डिस्प्यूट करंती हां आरे वर्ष हमकु लॉस हेतिला बोले 8.33% देइतिलो ए वर्ष तो ऑर्गेनाइजेशन हेवीली हाईली लाभ करछि ना हमकु काहे ए वर्ष 20% दबनी किंतु वर्कर माने भूली जानती जे आरे वर्ष जो बाकी अणा हेतिला सेटा सुझियागु भी पड़िबो ए जो डिस्प्यूट पाई बोली से माने कोन करंती स्ट्राइक करंती रिलेटेड रिगार्डिंग बोनस तापरे कलेक्टिव बार्गेनिंग अडॉप्ट करो डब्ल्यूपीएम अडॉप्ट करो जहां तुम अडॉप्ट करके सॉल्व करो नले से माने कोन करिवे से सब चलला गोटे ऑल टुगेदर प्रॉब्लम हैला तो एटा हला तमरो पिला माने बोनस एक्ट 1965 क्लियर ना पिला माने इना पूरा सब क्लियर ना यस ना हैला तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ओवर टुमारो आई विल डिस्कस कौन डिस्कशन करिबी ना कुछ भलो भलो कोन दीटा एक्ट से सब इंपोर्टेंट एक्ट को आगे डिस्कशन करतम हैला धर ग्रेच्युटीटा कंप्लीट कर देबा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी छोटा एक्ट 15 मिनिट रो एक्ट से पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट मिनिमम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पढ़िबा मिनिमम वेजेस एक्ट ए सब को आगे कवर कर देबा हैला चलो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स गोटे हां डाउट अछि को मैम जो 7000 रे मैडम बोनस कैलकुलेशन हबो 7000 रे 20% हम्म बोनस रहबो 12 मास पई मैम केते दिन प्रेजेंट रहबा दरकार पुन जे भी आसु नथिबो सुनो जी जेते दिन आसीथिबो तमे तो मिनिमम 30 दिन आसीबा कंपलसरी तो न तो तमे डिस्क्वालिफाई हो बोनस ही तुमको मिलिबन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रे होती जो बुझिलो ना आगे मैम मिनिमम 30 दिन से अकाउंटिंग ईयर रे प्रेजेंट थिबा निहाती दरकार जदि 30 दिन तमे आसी न तो तमे लास्ट आडू जॉइन कलो रे मा बसर शेष आडू जॉइन कलो हैला के दिन तमे काम करछो 15 दिन काम करछो तमे कहयो मते भी बोनस मिलिबो तुमको बोनस मिलिबनी कारण तमे 15 दिन काम करछो हैला देह खराब है गोटे लोकर से आसी पारानी लास्ट आड़ जॉइन करथिला आसी पारानी 10 दिन आसी ताको मिलिबो ना मिलिबोनी हैला तो एई केस क्षेत्र रे से माने भी टोटली मिलिबोनी लास्ट आड़ जॉइन करछ 30 दिन काम करछ ता माने कोन जो 30 दिन काम करछ बोनस कैलकुलेशन हला बेले ये केते दिन प्रेजेंट एब्सेंट से ऊपर एनालिसिस करा जिवो
12 ମାସ ମୁଁ ସେଠି 12 ମାସ ପକେଇଲି ସେଠି 12 ମାସ ପକେଇଲେ ତମର କଣ ହବ 1 month ର କାଲକୁଲେସନ ହବ ବୋନସ ର ତମେ 12 ମାସ ଆସ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 12 କଲି ତମେ 10 ମାସ ଅଛ ସେଠି 10 ହବ 8 ମାସ ଅଛ ସେଠି 8 ହବ ଯାହା ତମେ ମାସ ଅଛ ତାର ଗୋଟେ ପୁରା ସ୍ପେଶିଆଲ କାଲକୁଲେସନ ଅଛି ବୋନସ ର ତାମାନେ 30 ଦିନ ଯେତିକି କାମ କରି ଯେତିକି ବୋନସ ପାଇବ ମୁଁ 12 ମାସ ଖଟିକି କଣ ସେତିକି ବୋନସ ପାଇବି ନା ବୁଝିଲ ନା Yes, ma'am. Yes. ହେଲା ସେ ଅନୁସାରେ ବୋନସ କାଲକୁଲେସନ ହବ ବଟ୍ ବେଷ୍ଟ ସେଲିଂ ହେଲା 7000 ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଲା ଅପ୍ ଟୁ 21000 7000 ବୋନସ ଟା କାଲକୁଲେସନ ଆଉ ତମେ ଯେ 21000 ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଡୁବିଯିବ ବୁଡିଯିବ ହେଲା ଚलो थैंक यू सो मच टुमारो वी विल डिस्कस another 2 most important act जते जते सब important act आगे साथ दबा देन तापरे रेस्ट हम रेस्टिंग को डिस्कशन करबा थैंक यू स्टूडेंट्स बाय बाय अरे हेलो स्टूडेंट्स आज्ञा मैम हाँ हाँ सार टिके ब्रेक नहीं जो सार 12 वाले क्लास स्टार्ट करिवे हाँ हाँ सर देइचंती ग्रुप रे आगे आगे देइचन Thank तो you. ओके मैं कहियो भूली गल तो आउथरे सेट में आसली ओके ओके थैंक यू मैम थैंक यू मैम हाँ 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 थैंक यू